A very good evening to everyone. I'm Anas Kamble from FYBMS. Feel glad to serve you a warm welcome on this auspicious occasion of Kala Mahotsav of Sri D.D. Vispute College of Science, Commerce and Management, named Fortitude 2021, having a motto of courage, strength and fortune. Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. Let us wish this light of education takes over the darkness of differences, injustice, and violence in the world and guide us towards the progress, equality, and freedom. With this lamp lighting, we would like to praise the goddess of knowledge for blessing us. Moving towards the Saraswati Pujan. We hope she blesses us with more success in college and the future. With her blessings, let's put a start to our program. Annual Day. Annual Day is one of the most important days of the college students and authorities. On annual function, colleges celebrate their college's progress and success. They share students, teachers, and staff achievement for the last year and announce a plan for a year to come. Generally, this celebration includes cultural programs like dance, singing performance, and many such programs we are gonna experience this evening too. I hope you all are enthusiastic for it. I feel my honor to serve a warm welcome to our honorable chief guest Dr. G.D. Giri sir, having a diligent qualification in MCOM, MBA in HR, MPM Master in Personal Management, and also PhD in HR. He has a total teaching experience of 33 years and has also published 14 papers in international journals and 13 papers at national levels. He is also honored by Dr. APJ Abdul Kalam at Rashtrapati Bhavan, Delhi on 28 January 2007. He was also awarded with Board Outlook Learner Teacher Award by Air India in 2003. He was also secured Defence Secretary's Commendation with Medal, Government of India 2006, and also awarded with the Best NCC Officer Award 2013. We feel really glad to have your presence on this auspicious program, sir. Now, I would like to welcome the pillar of our college, Honorable Shri Dhanraj Vispute Sir, who is the member of Railway Ministry of Government of India and also an active member in Bharatiya Janata Party. He is also managing more than 50 educational institutes all over Maharashtra. Now, I would like to welcome our Honorable Secretary, Mrs. Sangeeta Vispute Ma'am. She constantly motivates the staff and students and also emphasizes on bringing out the best in everyone. I would also like to express my special gratitude in welcoming our respected principal, Vidya Mohad ma'am, and also all other respected principal of our college. Now I request our principal Vidya Mohan ma'am to have a few words and guide us towards the program. A very good evening to everyone. Honorable Chief Guest Dr. G.D. Giri Sir, Principal KLE College of Science and Commerce, Kadamboli. Our Honorable Chairman Dhanraj Vispute Sir, Honorable Secretary
Sangeeta Vispute ma'am, my dear HODs, teaching, non-teaching staff, and dear students. I would wholeheartedly like to welcome you all to Adarsh Kala Mahotsav 2021, Fortitude, on behalf of Sri D.D. Vispute College of Science, Commerce and Management. The year 2021 has been a very challenging year for all of us, as we are all working with the help and support of information technology. It has been very smooth yet. And so in a similar way today, we have managed to bring to you this annual function in the form of a movie riding through the performances and creations done by our dear students. In this challenging situation, the whole concept and the creations that we are going to show to you today have been done completely by our staff and students. From the last 10 months, we have given our best to the students and parents through virtual mode of teaching and learning activities. Various curricular and non-curricular activities, competitions, seminars, webinars were arranged in which students participated and excelled. This COVID situation has taught us to embrace the tough situation, find solution, and learn what is new. We have also kept ourselves updated, and as truly said, we have believed and sought out to keep the saying, the show must go on. As our today's event is named Fortitude, which represents courage, strength, and honor, the real and literal meaning of fortitude is to have courage in pain or in adversity. It completely resembles our situation today in this COVID-19 situation. We have suffered from a lot of pain and we have been in a lot of adverse conditions. But with the courage, with the strength, and with a lot of honor, we have come through it and are going to come through it. Without taking much time, I would like you all to enjoy today's evening program, some dance performances, some skits and some video creations by our students. Hope you love the program. I wish you all the best. Thank you very much. Our college was established in academic year 2010-11. It has been gaining new heights and still being firmly grounded to its origin. Our college immensely believes in innovation and always takes up new programs at undergraduate level. It always takes a serious look at how we can excel in cultural, sports, and social services activities, molding all over personality development in students. Now I would like to give you a brief about our college founder, president, late Shri Bapusaheb Vispute. It is only his vision to provide value-based quality education to the students, and today our college is fulfilling his vision. Now let's put a glimpse of the academic year 2020 to 2021 of our college. खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही।
कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। बासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्मा गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा, मीठी मीठी सी है आशा, चकले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। खुल गया आसमां का रास्ता, देखो खुल गया। मिल गया खो गया था जो सितारा, मिल गया मिल गया। रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां। उड़ने को तू आजाद है, बंधन को ही अब है कहाँ। धूप है छम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है। So we got a miraculous view of our college. It gave us another reason to feel glad to be part of our college. So without wasting time, let's give a start to our auspicious program with our first star performer, Ms. Dhwani Trivedi from FY BAF, performing a solo dance on mashup song Banthanchali and Makhna. ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। जग की रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। छोड़ा इकरार मेरा वो मखना में मखना, तू ही है संसार मेरा वो मखना में मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा वो मखना में मखना। छोड़ा इकरार मेरा वो मखना, छोड़ा इकरार मेरा वो मखना।
जो होना है आज हो जाए, अरे घबरा जाए, टूट ही जाए, आंधी आए तूफान आए या अम्बर छू जाए। That was a dazzling performance by Dhwani. Online classes have been really humorous and entertaining for most of us. कभी नेटवर्क इश्यूज के बहाने तो कभी माइक अनम्यूट करने में झोल. Combining all such as hilarious experiences, our biotech students have came up with most humorous online skit. So let's grab a look on it. यार लैपटॉप कहाँ रख दिया मैंने कल नहीं तो रखा था कहाँ गया ऑर्डर में क्या मोबाइल डाटा खत्म हो जाता है यार। मम्मा मेरा लैपटॉप ऑन कर दो, तब तक मैं मेकअप कर लेती हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब अपने माइक म्यूट कर लो, मुझे किसी की भी आवाज नहीं अच्छी है। मैम मतलब क्या आज हम बिना वॉइस के स्टडी करें क्या? दम शरफ है। हाँ हाँ, वेरी फनी, पढ़ाई कर लो। हे मैम आ गए, मैम आ गए। अब तक सो रही थी क्या? हाँ मैम, वो क्या है ना, ये लड़की रात भर पढ़ाई करती रहती है ट्यूबलाइट में, इसलिए इसकी बत्ती भी लेट जलती है। मतलब? मैम वो क्या है ना, उसका नेटवर्क रिसेप्शन खराब है, उसके दिमाग का भी और उसके फोन का भी। यार तो रिवाइव करो, में काम करने ये सत्यम, यहाँ पे जो चल रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओह, आज देखो, आज तो मेरा दिन ही बन गया। आज तो खुद एसआर के मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आया है। जब तक एसआर के अपना माइक ऑन नहीं करेगा और वीडियो कैमरा ऑन नहीं करेगा, तब तक मैं क्लास नहीं लूंगी। एसआरके को देखने के लिए तो पूरी दुनिया तरस रही है, बट एसआरके को देखना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। शिट। लोकल है सर के, कैमरा ऑन कर नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अरे दिखा ना फेस, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? मैम आपका वॉइस है। ओह सॉरी क्लास, आज हम क्या पढ़ने वाले थे? वैल्यू ऑफ एक्स ना? मैम एक्चुअली आज तक कोई नहीं जान सका। आज जब भी एक्स अल्फाबेट देखता हूँ तो उसकी याद आ जाती है। पे क्लास के देवता पढ़ ले यार अनम्यूट ही रखने देते, मैम भी खुश और हम भी खुश। Somebody please explain the mean. Okay, no noise. Please concentrate. Ma'am, I know what it means. Yes, Samir. Please explain to class. Samir, are you there? नहीं मैम, ये गया पतंग उड़ाने। अरे ये वही समीर है ना, बचपन में देखा था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। Everybody, mute yourself. Keep quiet. सब पढ़ाई करो, एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं
और मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मीडियम पढ़ाने वाली हूँ. That was a hilarious skit, I must say. I hope all our spectators enjoyed it. Secondly, let's put our hand together for our next performer, Miss Pradnya Kokate from SYBMS, performing a solo dance on song Ghar More Pardesiya. रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए. दरिया नदी दिर दाना देने दो, दरिया नदी दिर दाना देने दो, दरिया नदी. रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया. आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया. आओ पधारो पिया. तरी तगरा देना, तरी तगरा देना. समा सगा मगा नी धा मा धा पा, गा मा धा सा गा मा नी नी, गा मा नी धा मा गा रे गा मा धा पा, रे मा गा धा मा नी नी धा मा गा मा रे सा नी सा रे रे मा मा गा मा धा धा मा नी 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 रे सा नी धा नी धा मा गा नी धा मा गा रे 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 सा नी सा रे रे रे. ना तो मैया की लोरी नाही फागुन की होरी माही, कुछ दूसरा ना भाई रे. जब से नैना ये जागे एक धनुर्धर से लागे, तब से बिरहा मोहे सताए रे. दुविधा मेरी सब जग जाने, जाने न निर्मोहिया. घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया. आओ पधारो पिया. That was a marvelous dance by Pradnya. Now I request our Honorable Secretary, Mrs. Sangeeta Vispute ma'am, to address us towards the program. नमस्कार. आज आपला बापूसाहेब रेड्डी विस्पुते कॉलेज ऑफ सायन्स, कॉमर्स आणि मॅनेजमेंट कॉलेजचा हा 10वा ॲन्युअल फंक्शन. आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित डॉक्टर गिरी सर, प्रिन्सिपल ऑफ KLE कॉलेज ऑफ सायन्स अँड कॉमर्स कळंबोली. त्याचप्रमाणे आपल्या संस्थेचे चेअरमॅन, आपले आधारस्तंभ विस्पुते सर, आपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या प्रिन्सिपल विद्या मॅडम, उपस्थित सर्व गुरुजन वर्ग, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, विद्यार्थी, पालक यांना माझा मनापासून खूप नमस्कार. मित्रांनो, गेल्या 10 ते 11 महिन्यापासून आपण सर्वजण लॉकडाऊनमध्ये आहोत आणि सर्वजण एका मानसिक ट्रेसमध्ये आलेले होते. परंतु बाहेर जरी सगळं बंद होतं, तरी आमच्या प्राध्यापकांचे काम, प्रिन्सिपलांचे काम मात्र अविरत सुरू होते. त्यांच्या शिक्षण देण्यासाठी कुठेही खंड पडला नाही आणि आमचे लाडके विद्यार्थी त्यांनी देखील हे ऑनलाईन माध्यम स्वीकारलं आणि ते देखील यामध्ये सहभागी होऊ लागले आणि स्टुडंट आणि विद्यार्थी यांचं खूप छान कोऑर्डिनेशन होऊन अविरतपणे शिक्षण सुरू आहे. दरवर्षी आपण हा ॲन्युअल फंक्शन फिजिकली घेत होतो. प्रत्येकाच्या मनात
एक वाटत होतं की आता ह्या वर्षी आपला कार्यक्रम होणार नाही, आपल्या कलागुणांना वाव मिळणार नाही. परंतु मित्रांनो, आमची टेक्निकल टीम आणि आमचे प्रिन्सिपल, प्राध्यापक यांनी ऑनलाईन माध्यमाच्या द्वारे हा कार्यक्रम कसा होऊ शकतो हे शोधून काढलं आणि आजचा हा कार्यक्रम आपण सर्वजण आनंदाने त्याचा उपभोग घेत आहात, आनंदाने बघत आहात. तर मी या ठिकाणी सर्व प्रिन्सिपल, प्राध्यापक यांचं खूप कौतुक करते. टेक्निकल टीमचं देखील मी या ठिकाणी खूप कौतुक करते, अभिनंदन करते. त्याचप्रमाणे आमचे विद्यार्थी, कारण विद्यार्थ्यांशिवाय कार्यक्रम कसा, तर आमच्या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा आनंदाने या ठिकाणी सहभागी झाले आणि आपल्या कलागुणांना वाव दिला. त्यामुळे मी त्यांचं देखील खूप कौतुक करते, अभिनंदन करते. मित्रांनो, आपण समाजाला दाखवून दिलं की बाहेर कुठलीही परिस्थिती येऊ देत, पण आमचे शिक्षक, प्राध्यापक वर्ग यातून निश्चितच चांगला मार्ग काढतील आणि सर्व कार्यक्रम छानपणे या ठिकाणी घेतील. ऑनलाईनच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम या ठिकाणी होत आहे. सुंदर पद्धतीने आयोजन केलेलं आहे. त्यामुळे मी सर्व आयोजकांचे या ठिकाणी खूप कौतुक करते, अभिनंदन करते आणि या ठिकाणी थांबते. धन्यवाद. Thank you ma'am for your informative addressing. जो आया है वो जाएगा, बस मर्जी हमारी होगी. A famous dialogue from Mirzapur, right? Well, कालीन भैया को थोड़ा साइड में रख के let's put your hand together for our next meteoroid, Miss Bhavna from TY Biotech, performing a solo dance on Humri Marzi. हमरे से परिणीत आजा ना तो सही ऐसी मन के है सच्ची तुम हमसे तारों की परे हुई गलती सारे हमने गाया तुम क्यों सुनी किसकी मर्जी जो थे वो तो आए जा हम भूल जाए जा अब तो आए जा हम भूल जाए जा वो तो आए जा देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं. तुम तो आस सास तुम्हें और रात साथ बात करे क्यों ना रह लो ना. अब तो आए जा हम भूल जाए जा अब तो आए जा हम भूल जाए जा अब तो आए जा हम भूल जाए जा अब तो आए जा हम भूल जाए जा. A deceased person is never a discriminable person. To spread awareness regarding such social flaws, our TYIT students have flawlessly represented a social cause drama named Sachi Dosti. So, killing our eagerness, let's give it a glance. यज्ञेश, कसा आहेस? मी मस्त. तू कशी आहेस? मी पण मस्त. कसा गेला मग लॉकडाऊन? माझा तर लय बेकार गेला. समर आ गया. कोरोना हुआ था ना? हाँ, लेकिन उसको 1 महीना हुआ. हाय अमर, कैसे?
मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? हमारा छोड़, तुझे कोरोना हुआ था ना? हाँ रे, बट उसको तो 1 महीना हो गया। मुझे डर नहीं लगा क्या? हाँ, मुझे डर तो लगा था, लेकिन मुझे मुझसे ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों का डर लगा था। क्या कहना है तुझे? जिस दिन से मुझे कोरोना हुआ था, उस दिन से तुम लोग का मुझसे बात करने का नज़रिया बदल गया है। दोस्तों का मुझे दिन में 10 बार फ़ोन आता था, उनका मुझे कॉल आना ही बंद हो गया। एक मेरा यारा, एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी, वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। कोरोना आज है, कल चला जाएगा, लेकिन मुझे ये सबक सिखा गया कि अपने ही अपना साथ छोड़ देंगे, और यही हुआ, इंसानों ने इंसानियत छोड़ दी। ये पहली बार हुआ, ये क्यों एहसास हुआ। मुझे तुम लोग से कोई उम्मीद नहीं थी, बट इतनी उम्मीद थी कि तुम लोग मुझे एक फ़ोन करोगे और पूछोगे कि कैसा है दोस्त। इस बीमारी से हमें बहुत कुछ सीखने मिला। अभी भी समय गया नहीं है दोस्तों। अगर आगे कोई ऐसी बीमारी वाला इंसान मिले तो उसकी मदद तो छोड़ दो, बट उससे नफरत भी मत करो। अगर कुछ ज़्यादा बोल गया हो तो माफ़ करो दोस्तों। अपना ख्याल रखो, और आगे कभी मदद लगे तो बेझिझक मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊँगा। इससे बहुत बड़ी गलती हुई। कोई बीमार इंसान मिले तो उसकी ज़रूर मदद करेंगे। अगर कोई आपको बीमार इंसान मिले तो उसकी ज़रूर मदद करना। Please don't like this video. Learn from it. ओ रंगीलो मारो ढोलना ढोलना. Well, I know I sing cringy, but this song drives us into a Gujarati vibe, right? So let's welcome our next performer to put a fire on the stage, Miss Kalpana Sharma from FYCS, performing a solo dance on the song Dholna. Now I request our chief guest, Honorable Dr. G.D. Giri sir, to address us in few words. Dear students of D.D. Vispute College of Science, Commerce and Management, Panvel, I am very happy
to address you on the occasion of your annual festival, Adarsha Kala Mahotsav 2021. Respected Chairman, Sri Dhanrajji Vispute, Secretary, Srimati Sangeeta Vispute Madam, Honorable Principal, Vidya Mohol Madam, and my dear teacher colleagues. Here the caption I have seen, fortitude. Dear students, really it is rightly mentioned that the fortitude is required in our life to be a successful person. Fortitude describes courage, strength, and fortune. Yes, one should be courageous. And if you develop courage in you, you yourself you can change. You can be a leader in every path of life. Courage. I would like to tell you one story about this. In one college, what happened? There was a great principal having a good personality, good vision, good aptitude, and whatever required qualities are there. One day, all teachers they said that we don't want this principal. We'll have a principal among ourselves. And they decided that tomorrow onwards, Mr. XYZ will be the principal. It doesn't happen actually, but they decided it. They were having lobbying. And then after, a person who is a real principal, he had a habit to come at morning 9 o'clock to take a round in the college and to sit in the chair and do the administrative work. Next day, a teacher appointed principal, he came at 8 o'clock, he went in the office and he occupied the chair of the principal. But a real principal, as usual, he came at 9 o'clock. He didn't come at 7:30. He came at 9 o'clock, he took round and he entered in his cabin. The so-called teacher appointed principal, he was not having that much courage. So a real principal, as soon as he entered in his cabin, he got up and he went aside. And the real principal, he occupied the chair. So this shows the courage in a person. And one should be courageous. Daring is different. Courage is different. Courage, strength, and fortune you get through your consistency in doing some activity. Now let us see about the strength. What is the strength? You should have inner strength. You get inner strength in the student life only. That is said, Lata Mangeshkar used to say that if I would have become advocate, I will be the successful advocate. If I would have become doctor, I would have become a successful doctor. In the same manner, Sachin Tendulkar also used to say, if I would have not become a cricketer, in any field, I would have got success. So what is the secret behind this? The secret behind this is that your consistency in practicing one particular activity, your focused approach, your initiative in conducting various activities, in organizing activities, and dear students, you can grab this opportunity in the college life only. Once you are confident, you can build strength in you. So please keep in your mind that the strength you can grab in a course of time. Immediately nobody can be a strengthful. And dear students, opportunities are given by the college. And what about fortune? Fortune we can say in two ways. That is occupying a lot of wealth, and another is name and fame. And one more thing I would like to add in that
is happiness. One should be happy. Because everyone can't become what you decide. Everyone can't become APJ Abdul Kalam. Everyone can't become Amitabh Bachchan. Whoever you are, see that how I will be happy. Try to be a good family person. Try to be a good officer. Try to be a good administrator. Try to be a good academician. Try to be a good scientist. Try to be a good leader in politics. So if you decide in this line, definitely you will think about your happiness, and once you understand your happiness in doing one particular activity, that will be your success. Dear students, Amitabh Bachchan wanted to be a pilot in his future, but he became film actor because he grabbed the opportunity. See that wherever are the opportunities, and once you have opportunities in your life, you will be the successful person. But knowing the opportunities requires creating opportunities. So you have to create the opportunities. See the surrounding environment and see that how I will be in that particular activity, how I will develop some sort of opportunities for myself. Therefore, the courage, strength and fortune you will enjoy, you will learn, you will imbibe in you in the college life only. Because college life is a foundation for your future. You can build your future in this particular period only. Though you are going to complete your graduation, do your post-graduation. Do research. Try to be leader in the field whichever you are. And for that purpose, whatever you learn, implementation is very much essential. Learning and implementation, these are the two parts. So implementation is very much essential. I'd like to tell you one story that in ancient days, a guru had 3 students. He taught these 3 students from the bottom of heart. He gave all the education in the field of using arms, using arrows, using bows, then Vedas, and so many other things. And these 3 students, they completed their course, we can say, their studies in that ashram. And on the last day, they said that to the Guru, "Sir, we want to give you Guru Dakshina. So what we should do?" He said that whose Guru Dakshina will be proper, I will give certificate to that student only. Thereafter, the Guru gave them a program that I will be in so and so village. From this ashram to that village, you have to come. That will be Guru Dakshina for me, and I will give you certificate. And the certificate was given on that copper plate, which was called as Tamrapat. So, next day morning, these 3 students, they started walking towards that village. The road of that village was hilly region. They have to climb up and downs, and they have to move. So when these 3 students, they started walking, at the beginning they came across to a hungry person who was lying there. So it is quite obvious that everyone was thinking, I have completed my education, I have taken this particular thing, so now I want certificate and I have to see what I can do in my life. So 2 of them, they were in hurry. They said, let it be. Why we should feed that particular person?
We have to reach early, we have to get certificate, we have to go. But one student, one good student, what he did, he waited there, he taken out whatever food stuff is there in his bag and he offered that food to that hungry person. Later on, two persons went ahead and third person was going behind them, and two students, they have come across to a tree which was lying on the road. So two of them, they struggled, they climbed that particular tree and then they jumped out and they started walking. But one student, who was a good student, he said that no, this is not right. This tree is lying on the road. Sometimes there may be some sort of emergency for women, for old people. So it is not good that if a tree is lying on the road. So he's gathered local people, he requested them and he told them that we have to remove this particular tree. And with the help of local people, he removed it. Two of them, they went early. Guru asked, where is another student? They said that he is coming. Why? What is the reason? He must be walking slowly. Then after third student, he came. And Guru gave him certificate. And Guru said that out of three, only one has given me Guru Dakshina. The third student who reached in that village and Guru said that, yes, I have got my Guru Dakshina, and Guru offered certificate to that particular student only. Dear students, I congratulate you for participating in such a grand program of your college in the name of Adarsh Kala Mahotsav 2020-21, and I wish all that be courageous, be strengthful, and automatically you will be the fortunate to create your future. Thank you very much. Thank you, sir, for your delicate words. Corona pandemic have drastically affected all of our lives. So, our FYIT students have prepared a short drama on the replication of different lives during pandemic with different perspectives. Let's have a glance towards it. हॅलो, हा बोल ना. हा निखिल, काय चाललंय? काय नाही रे, बसलो हॉटेलवर. तू काय करतोय? काय नाही, बस पबजी मध्ये मिळलो, बोर झाले, बोललो काहीतरी करूया म्हणून तुला phone अरे केलाय. मला पण जाम बोर होतो. अरे मी ऐकलं पियुष आलाय फॉरेन वरून. हा हो, कॉल कर त्याला, कॉल कर. थांब. हॅलो, हा बोल ना यश. अरे पियुष, मी ऐकलं फॉरेन वरून आलास तू. हा रे आलो, महिना झाला. काय बोलतोस? हो काय करायचं का मग भेटायचं प्लॅन काय? हो, चला करूया. अरे तो निकेतन आठवतो का तुम्हाला? हा त्याला जॉब लागला. अच्छा, जॉब लागला का? हा ओके. कर त्याला पण कॉल कर. हॅलो बोल ना. हा निकेतन, काय करतोय? काय नाही रे. हा मी ऐकलं जॉब बिबला लागलायस. हा जॉब लागला. असं आहे का? अरे ऐक ना यश, तुला ती मोहिनी आठवते का? अच्छा, ती टॉपर का आपल्या क्लासमध्ये ती? हा अरे काही दिवसापूर्वी आली ती हॉटेलला, तिचं लग्न झालं. काय बोलतोस? मग नंबर घेतला की नाही तिचा? हो घेतला नंबर. थांब तिला कॉल करतो. हा कर. हॅलो. हा हॅलो, बोल ना. हा मोहिनी, कशी आहेस? मी बरी आहे, तू कसं आहे? सगळे मजेत. सगळे कॉन्फरन्स वर आहेत. यश, पियुष, निकेतन सगळे आहेत. काय मोहिनी, कसं चाललंय? चाललंय सगळं, पण आता काय वैताग आला घरी बसून आता. भेटूया सगळे एकत्र. हा तेच भेटायचं प्लॅन करत. या तुम्ही सगळे माझ्या हॉटेलवर. याच्यावर जाऊया. हो ठीक आहे चालेल. या संध्याकाळी. चल भेटू.
कसं आहे? अजून कोरोना गेला नाही. ठीक आहे, सॅनिटायझर घे आणि मास्क काय घातला तू? अरे मास्क ना. बाकीचे असतील येत असतील रस्त्यात. अरे पियुष कसा आहे? अरे मस्त आहे, तू कसं आहेस? मी पण मजेत आहे. अच्छा ठीक आहे, चल. काय निखिल कसं आहे? म्हणजे काम कोरोना काय झालं? अरे काय कोरोना वगैरे नाही. काय कोरोना गेला नाही अजून. ठीक आहे, सॅनिटायझर घे आणि मास्क कुठे तुमचे? मास्क लावत मध्ये लावून बसा. आम्ही फक्त एकदाची कोर्सी हे सॅनिटायझर घ्या तिकडे लांब बस. घाबरत नाही आता, माहिती आहे, नंतर झालंय. काय नाही धंदा, कोरोनामुळे सगळं बंद झालेलं. कोण यायला कस्टमर नाही, काय नाही, सगळं बंद. पेमेंट द्यायला वापरलं काय नाही. आता लॉकडाऊन म्हटलं तर थोडंफार काय दिवस तुझं कसं झालं? मला चांगलं झालं होतो. अरे मित्र ऐकले डॉक्टर्स आणि मेडिकल ट्रीटमेंट आणि काय काय ऐकले. अरे तुझ्या ऐकायच्या गोष्टी आहेत रे त्या. सगळं एक नंबरचे डॉक्टर्स आहेत जर्मनीकडे, एक नंबरचे हॉस्पिटल्स आहेत, पण तिथली लोक चांगली नाहीत. त्या मानाने कोविडची सिच्युएशन आपल्या भारताने चांगली आहे. काय फायदा मग विदेशला जाऊन? अरे मग तेच तर, एवढा सगळा विचार करून गेलो, पण आता वाटते की आपल्याच भारतातच राहायला पाहिजे. आपला देशच बरा त्यापेक्षा. हा रे, माझं काय, तू जॉबला लागला ऐकले मी. हा, तुझं कसं झालं? एकदम म्हणजे पण कोरोनाची परिस्थिती असल्यामुळे भरपूर त्याला बोलायला पण येत नाही. एवढा का वैतागलास तू? जॉब माझा गेला असता, पण माझा परफॉर्मन्स एकदम चांगला असताना मी टिकवला. ते बरं हा, ते झालं. बरं पप्पा झालं. चांगलं असल्यामुळे वाचलं. फोनवर वैतागत होती, काय प्रॉब्लेम? माझं तर काय सांगू, लॉकडाऊन मध्ये आता एवढं घरी बसून कंटाळा आलाय. सारखं हे बनव ते बनव. कॉलेजला असेल तर सरळ सरळ सांगा सासू कळलं तुला. तसंच म्हणावं लागेल. पण काय सासूपेक्षा लॉकडाऊन मुळेच खूप वैताग आलाय. तर घरी बसून हे करा ते करा, सगळ्यांचं बघा, खूप वैताग आलाय. आपलं कसं जसं चालू होतं तसं चाललंय. कळायचं आणि बसायचं आणि खायचं. फक्त हे निघत नाही तुझ्यासाठी. काहीतरी सांग. आवडेशाला काय होत नाही आता. बाकी व्हिडिओ वगैरे बघितला की नाही कोरोनाच्या? अरे कसल्या व्हिडिओ एक आहे जी माझ्या खरं भेटून बोलण्यामध्ये ना, ऑनलाईन सोशल मीडिया यांच्यावर नाही. काय म्हणतो? भरपूर भेटण्यामध्ये फील आहे. तो ऑनलाईन वरती कुठे येणार आता? चला मग भेटूया. येत राहील. यावरून हे लक्षात येतं की यापूर्वी आपण जेव्हा कोविड सिच्युएशनच्या आधी आपण जेव्हा भेटायचो तेव्हा आपण सगळे फोनमध्येच असायचो. तेव्हा आपल्याला असं वाटायचं की सगळं जग फोनमध्येच आहे. पण आता जेव्हा जग बंद पडले तेव्हा कळतंय की हे इकडे सगळीकडे काही नसून आपलं जग हे आपल्या मित्रांमध्येच आहे. आणि खरं भेटण्यामध्ये जो फील आहे तो ऑनलाईन मध्ये नाही. झाली जागरण तरी न सुस्ती यारी ओके मग सरी बरस दिल फुल केलं फ्रेंडशिपच्या बागा भले असे मोठी खिशास खिडकी तरी कधी कोण लागे न खडकी यार असो छोरा या कोरी लडकी दिला हक्काची जागा. जो तेरा हाल है वही मेरा हाल है, हाल से हाल मिला ताल से ताल मिला. आए है क्या बात है. कुछ ऐसे ही ताल से ताल मिलाने के लिए लेट्स वेलकम आवर नेक्स्ट परफॉर्मर मिस मोहिनी फ्रॉम FYIT परफॉर्मिंग अ मार्वेलस सोलो डांस ऑन द मेरा झुमका उठा के लाया यार वे जो गिरा था बरेली के बाजार में मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई बोली घूम कर बना दे के मैं आ गई मुझको लगा के नच ले आजा नच ले
मैंने गलती करी थी, मेरी नथनी पड़ी थी। मैंने गलती करी थी, मेरी नथनी पड़ी थी। कि सोने में उसको रंगा गई, मैं रंगा के दरिया पे आ गई। मोहल्ले में कैसी मारा मार है, मेरे दर पे दीवानों की बहार है। सबको नचा के नच ले, आजा नच ले मेरी यार, तू नच ले, झनक झनक झनकार। ओ नच ले मेरी यार, तू नच ले, अब तो लूटा है बाजार। मैं तो कम से निकली थी, सारा तन के चली थी। मैं तो कम से निकली थी, सारा तन के चली थी। आगे जाके गली पे बल खा गई, कोई जाने जवानी कब आ गई। मेरे सद के जमाने की कमाई दे, मुझे देता उधारे हलवाई दे। सबको भुला के नच ले, आजा नच ले मेरी यार, तू नच ले, झनक झनक झनकार। ओ नच ले मेरी यार, तू नच ले, अब तो लूटा है बाजार। नच ले मोहब्बत मुकम्मल होती तो ये शौक़ कौन पालता। अक्सर दिल टूटे आशिक ही शायर हुआ करते हैं। So let's put your hand together for Ashik of our college, Mr. Sachin Jamdar from TYBMS, presenting a beautiful poetry. खास तो हो तुम, खास बड़ा अच्छा शब्द है, क्योंकि मेरे लिए खास तुम हो। तुम्हारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना मुझे बेहद अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। बदले में कुछ खास चाहिए भी नहीं, तेरी मुस्कुराहट के सिवा। और तुम्हें हंसता देखना, तुम्हारी बातें सुनना मेरे दिन का सबसे अच्छा वक्त हुआ करता है। और जब कभी परेशान होता हूँ तो तुम्हारी तस्वीर मुझे मुस्कुराने की वजह देती है। पता ही नहीं चला कब तुम्हारी आवाज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यारी बन गई। तुम्हारी जगह कैसे किसी को यूं ही दे दूँ, किसी को अपना खास ऐसे कैसे बनने दूँ। आज फिर तेरी याद आ रही है, तेरी कमी बड़ा तड़पा रही है। जैसे तुम समझती थी शायद ही कोई मुझे समझे, ये बात न जाने क्यों अंदर ही अंदर मुझे खाया जा रही है। जो डर था तुझे खोने का, वो डर किसी के लिए भी नहीं है। मुझे तेरे जैसा कोई दोबारा मिला भी तो नहीं है। तेरी याद आज बेहद आ रही है, आंखें खुद नम हो जा रही है। हो सके तो माफ कर। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ तुमसे, मगर कह नहीं पाता। भूलना चाहता हूँ तुम्हें, मगर भूल नहीं पाता हूँ। देखना चाहता हूँ सपने तुम्हारे, पर सो नहीं पाता हूँ। तुम्हारी आवाज़ आज भी सुनाई देती है, आज भी तस्वीरें देखकर वैसा ही मुस्कुराया करता हूँ जैसे पहले दिन तुम्हें देखकर मुस्कुराया था। नहीं होती किसी से बातें जो तुमसे हुआ करती थी, और दिल भी नहीं करता किसी से बात करने की। मैं नहीं जानता गलत तुम थी या मैं, शायद गलती मेरी थी, क्योंकि उम्र तुम्हारी मुझसे कम थी, पर मुझसे ज़्यादा समझदार तुम थी। हाँ वैसे भी नादान था मैं, पहला प्यार था तुम। नहीं खोना चाहता था तुम्हें, इसलिए रिश्ता बचाने के लिए जो सही लगा वो करता रहा। नहीं सोचा था जो तस्वीरें खुशी में ली गई थी वो कब में काम आएंगी। और हाँ, तुम्हारे गिफ्ट भी संभाल रखे हैं मैंने। तुम्हें तो नहीं रोक सका, पर उन तोहफों के साथ काफी यादें रोक कर रखी है मैंने। तुम साथ होते हुए भी दूर थी, और आज भी दूर हो। खैर, तलाश है मुझे उस शाम की जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में हो, मेरी उंगलियां तुम्हारी जुल्फों को सहला रही हो, और फिर से हम पहले जैसी बातें करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। अब जब मिलोगे तो लौटने की बात ना करना, और अगर चले भी जाओगे तो वापस लौट कर मत आना। Ever heard of time travel? Well, most of us feel it's impossible, right?
What if I make you ride through eras before and after Corona pandemic? Okay, audience, so tighten your seatbelts and get ready to glance yourself with Vispute's instant time travel. So here we go. आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। There's a place in your heart, and I know that it is love. It's a place much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Love that cannot lie.
there's a joyful giving. We try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There we dream, stop existing and start living. And it feels that always, nothing ever was broken. Make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. And the dream we were seeking will reveal a joyful face. And the world we want to live in will shine again in grace. Then why do we keep straining those burnt crucified soul? It was plain to see this world is heading in. We got love and light so high, and our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. So the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you get enough living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. That was a marvelous time traveling fashion show. Well, from हाई व्हाट्सएप टू हाई ऑन व्हाट्सएप हमारा ये सफ़र काफ़ी एडवांसिंग एंड लर्निंग ओरिएंटेड रहा. सोशल मीडिया हैज़ रिगार्डलेसली गिवन a huge impact on our daily lives. व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब के बिना कैसे रहती ज़िंदगी हमारी यार. वेल, to explain pros and cons of social media, students of BAF and BMS have came up with a social informative skit named Boon and Bane of Social Media for all of us. Are you ready to vibe yourself with the social media zone? Okay, let's go. Hey guys, what's up? अरे यार व्हाट्सएप नहीं इंस्टाग्राम. अरे यार मैं पूछ रहा हूँ कैसे हो तुम लोग? अरे सब ठीक है अच्छा मुझे ना तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग चीज बतानी है. यार. अभी नहीं, हाँ अभी इंस्टा लाइव का टाइम है. हाँ तो कब बताऊंगा तुम्हें? रात को 11 बजे स्काइप पे आ जाओ. ओके डन. या बाय बाय बाय. अरे पूजा, सिमरन, ध्वनि. अरे क्या कर रहे थे? क्या देख रहा हो? कब से दिन भर फोन में लगे रहते हो? दिन भर इंस्टाग्राम, यूट्यूब. अरे क्या यार 21st सेंचुरी में तो ऐसी बातें कर रहा है. 21st सेंचुरी ने फोन हमें अच्छे यूसेज के लिए दिया है, ना कि उसका मिसयूज करने के लिए. और तुम्हें ये बात समझ नहीं आती. बाद में जब ये जो तुम्हारा कीमती टाइम है ना, ये वेस्ट कर रहे हो तुम लोग. बाद में जब तुम लोगों को पता चलेगा ना कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया है, तब तुम्हें पता चलेगा. हाँ मानुष, तू ठीक कर रहा है. हम फोन से ज्यादा ही एडिक्ट हो रहे हैं. हम हमारे फोन का यूजेस कम करेंगे. हाँ. थैंक्स मानुष. ये लो.
सुन ना, इसको रिक्वेस्ट भेजू क्या? क्यों यार, क्यों परेशान कर रही है? अरे मैं दिन भर यही काम करती हूँ, मुझे अलग अलग अकाउंट से लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है। इससे तुझे क्या मिलेगा? अरे कल क्या हुआ है ना, कल मैंने एक लड़के को बुद्धू बनाया, उसने मेरे फोन का रिचार्ज करवाया। अरे ऐसे कितने लोगों के साथ चीट करेगी? उनके इमोशंस के साथ करके तुझे क्या मिलेगा? तुझे पता है सेक्शन 66D के अनुसार अगर कोई इंडिविजुअल साइबर क्राइम में पकड़ा जाता है तो उसे 1 लाख का फाइन एंड 3 साल की जेल होती है। सॉरी सर, अच्छा हुआ तूने मेरे को बताया, थैंक गॉड। अभी से मैं ऐसा नहीं करूँगी। वेरी गुड, अब पढ़। So students, today we have learned capital accounting. सबको समझ में आया? Okay, 5 minutes में आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, आप वेट करो। ओके अरे क्या यार, तू 5 मिनट भी बिना फोन के नहीं रह सकते तुम सब? नहीं माना अपने फोन, नहीं ले सकते। ये पकाती रहेगी, तुम लोग इसका सुनो, इंस्टा पे लाइव आ रखो अपने फोन में, आएगी अभी। मैम आईडी कम कर देगी। उसको सब लोग अपने मोबाइल में। मम्मी, बहुत दिनों से दीदी की खबर नहीं, क्या हुआ दीदी का? बेटा स्काइप का मैंने कौन किसकी खबर लेता है? कर ले वीडियो कॉल। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ओके, जस्ट अ मिनट। हाय भाई, कैसा है तू? हाय दीदी, कैसे हो आप? बस यहाँ पे तो सब ठीक है, बस तुम लोग को बहुत मिस कर रही। हाँ दीदी, हम भी आपको बहुत मिस करते हैं। दीदी आपकी स्टडीज कैसे चल रहा है? बस सब बढ़िया चल रहा है, तू बता तेरा कैसा चल रहा है? हाँ दीदी, यहाँ पे भी सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा दीदी, अभी मेरा कॉलेज है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय। Now, I would like to share some clips of making of Fortitude 2021. आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, फूक मार के धूल झाड़ ले, छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, फूक मार के धूल झाड़ ले, छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। खोल दे पर, 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 खोल दे पर।
We just saw how passionately we students and teachers were dedicated in making of fortitude. Now I request Honorable Shri Dhanraj Vispute sir to address us in few precious words. नमस्कार. आज आपल्या श्री ऋषिकेश शिक्षण प्रसारक मंडळ नवी मुंबई संचलित श्री डी विस्पुते कॉलेज ऑफ सायन्स कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट देवद विचुंबे न्यू पनवेल च्या आदर्श कला महोत्सव 2020-21 आयोजित फॉर्टिट्यूड या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले प्रमुख अतिथी माननीय डॉक्टर जी.डी. गिरी सर, प्राचार्य के.एल.ई. कॉलेज ऑफ सायन्स कॉमर्स अँड कॉमर्स कळंबोली, संस्थेचे सचिव माननीय श्रीमती संगीता विस्पुते मॅडम, आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्रीमती विद्या मोहोळ मॅडम, सर्व प्राध्यापक कर्मचारी आणि सर्व विद्यार्थी आणि पालकवर्ग. आज आपण या 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे, या कार्यक्रमामध्ये फार कठीण परिस्थितीमध्ये आपल्या संस्थेने हा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. मार्च 2020 पासून तर जवळजवळ 10.5 महिन्यामध्ये सगळे या कोविड-19मुळे संपूर्ण मानवजातीला या जगावरती फार मोठं संकट आलं. परंतु या आपल्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये आपण याच्यावर मात केली आणि म्हणून या ऑनलाईनच्या माध्यमातून आज जो आपण कला महोत्सव आयोजित केलेला आहे त्याबद्दल या संस्थेची संपूर्ण प्राचार्यपासून सगळी टीम आणि विद्यार्थी आहे यांना मी निश्चित धन्यवाद देईल की आपण ह्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा आपलं काम न थांबवता हा ऑनलाईनच्या माध्यमातून सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केला. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपल्या या संस्थेने 24 मार्च 2021 रोजी 24 मार्च 2020 रोजी या भारताचे पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेब यांनी जेव्हा लॉकडाऊन जाहीर केला, या लॉकडाऊन जाहीर करत असताना आम्ही पाहिलं का आता 21 दिवस करायचं काय, आणि म्हणून सुरुवातीला संस्थेची इतर कामकाज आपण पाहिली आणि त्याच्यानंतर ऑनलाईनच्या माध्यमातून आपण प्रथम 1 मे 2020चा महाराष्ट्र दिनाचा आपण कार्यक्रम ऑनलाईनच्या माध्यमातून घेतला. त्याच्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ आणि आपली संस्था अशा संयुक्त तो कार्यक्रम घेतल्यानंतर मला असं लक्षात आलं की बा ऑनलाईनच्या माध्यमातून आपण विद्यार्थ्यांपर्यंत, पालकांपर्यंत, समाजापर्यंत पोहोचू शकतो. आणि म्हणून जवळजवळ ह्या 2020मध्ये आपण संपूर्ण अकॅडमिक काम ऑनलाईनच्या माध्यमातून केलंच, पण या वर्षभरातले संपूर्ण कार्यक्रम एकही कार्यक्रम मी स्वतः जवळजवळ या माध्यमातून आपण जवळजवळ आपल्या संस्थेचे 150 कार्यक्रम आपण ऑनलाईनच्या माध्यमातून घेतले आणि घेतल्यानंतर आपण जवळजवळ 25,000 लोकांपर्यंत आपण पोहोचलो. म्हणजे परिस्थिती जरी कठीण आलेली असेल तरी सुद्धा या परिस्थितीवर मात करण्यास ते टेक्नॉलॉजीचा वापर करून आपल्या संस्थेने एक चांगला पायंडा पाडला आणि आज आपण जो कार्यक्रम घेताय त्या कार्यक्रम निश्चितच त्याचं एक उत्तम उदाहरण आहे. आता ह्या वर्षी आपल्याला असं वाटत होतं की परिस्थिती खूप कठीण आहे, प्रवेशावर त्याचे परिणाम होतील, आर्थिक गोष्टी अडचणी, ह्या गोष्टी आपल्याला अडचणी आल्या, पण त्याच्यावर सुद्धा आपण मात करू शकलो. आणि म्हणून आज आपल्या या वर्षी आपल्या या महाविद्यालयाने ॲडमिशनही पूर्ण केल्याच, पण अकॅडमिक कामसुद्धा पूर्ण केलं. पण विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना कुठेतरी वाव मिळावा म्हणून या आपल्या या संस्थेने निश्चित हा जो आजचा कार्यक्रम घेतला निश्चितच कौतुकास्पद आहे. आणि त्याच्यानंतर आज ज्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून आले डॉक्टर जी.डी. गिरी सर, त्यांच्या या के.एल.ई. कॉलेज ऑफ सायन्स कॉमर्स अँड कळंबोली याच्या उद्घाटनासाठी या उद्घाटनाचे माननीय शरदरावजी पवार आले. त्या कार्यक्रमाला मी स्वतः उपस्थित होतो आणि त्यांचे अध्यक्ष संस्थेचे प्रमुख आहेत डॉक्टर कोरे साहेब, त्यांनी मला स्वतः पत्रिका पाठवली आणि त्या कार्यक्रमाला उपस्थित होतो. निश्चितच एक के.एल.ई. संस्थेचं तर नाव पूर्ण भारतामध्ये आहे, फार मोठी संस्था के.एल.ई. संस्था आहे आणि त्या संस्थेचं कामकाज जर पाहिलं निश्चितच वाखाणण्याजोगं आहे. आणि अशा संस्थेचे प्राचार्य डॉक्टर जी.डी. गिरी सर आले, त्याबद्दल संस्थेचा अध्यक्ष या नात्याने मी त्यांना धन्यवाद देतो आणि आपले असेच ऋणानुबंध आपले दृढ होत असे मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि याच्या कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir. I would like to thank our Honorable Chief Guest Dr. G.D. Giri sir for investing his precious time for our program.
I would also like to thank our Honorable Chairperson Shri Dhanraj Vispute Sir and our Honorable Secretary Mrs. Sangeeta Vispute Ma'am for their essential presence in the program. I would also like to thank our Principal Vidya Mohad Ma'am and all our teaching staff who efficiently administrated the well-going of the program. I also thank Principal Ma'am for giving me this wonderful opportunity of anchoring such a ferocious program. Last but not the least, I would like to present all the credits for the prosperous making of Kala Mahotsav.